Hello students, today we are going to discuss some problems from exercise 6.5 of chapter triangle. So these problems are depend on Pythagoras theorem and converse Pythagoras theorem. So let me start. First problem, D and E are points on the sides C and CD respectively of a triangle ABC at right angle at C. Prove that A square plus BD square is equal to AB square plus B square. Okay. So let us first we draw the figure. Suppose this is triangle ABC, right angle at C. Okay. So it is A, B, C. Now D and E are the point on sides CA and CD. D is the point on CA and E point on the side CD. So this is the point. So we have to show A square plus BD square is equal to AB square plus D square. So we just join A and this. Now consider LHS. So first LHS is A square plus BD square, and from this LHS we have to show AB square plus D square. Okay. Now see A square. See A square side आपको सिर्फ साइड लिखना A, ये साइड किस राइट ट्रायंगल में है? तो राइट ट्रायंगल ACE. So in right triangle ACE, A square is equal to AC square plus C square. Okay. Now BD square. See BD square. BD line ये कौन सा ट्रायंगल में? In right triangle DCB. So BD square is equal to, we get CD square plus BD square is equal to CD square plus BC square. Okay. So substitute these in this equation. So we get, now see A square. A square is AC square plus C square. Then BD square. BD square is CD square plus BC square. Okay. Now हमको क्या चाहिए? AB square और D square. तो सबसे पहले AB square का है, ध्यान से देखो yes. तो ये बड़ा ट्रायंगल. So in right triangle ABC, AB square is equal to AC square plus BC square. और दूसरी साइड है D square. So D is this side, ये ट्रायंगल. So in right triangle DCE, okay, DCE. So D square is equal to DC square plus C square. DC square plus C square. Now see here, AC square plus DC square. AC square plus DC square. Okay. So write down here star. So from star, AC square plus BC square. AC square plus BC square is AB square plus then C square plus CD square. C square plus CD square. C square plus CD square, that is D square. So this is our RHS. Okay. So it is very easy problem. तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है,
हमने LHS लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इस ट्रायंगल में ACE, AC स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और BD DCB ट्रायंगल में BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो चाहिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, C AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या है D स्क्वायर, so we get RHS. okay, now see next problem. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. It is given, and we have to prove 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. So पहले हम फिगर निकालेंगे. Suppose this is ABC triangle. The perpendicular from A on side BC. तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन निकाला BD. okay, intersect BC at D such that BD is equal to 3C, means this BD is equal to DC is given. So we have to show 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. So now we have given BD is equal to 3C. Okay, now we consider just this side RHS. So RHS is equal to 2AC square plus BC square. Okay, now see AC square which triangle, just you take right triangle, तो AC square तो ये ट्रायंगल में देखो, तो यहां पे आपको इन राइट ट्रायंगल ADC AC square is equal to AD square plus DC square. ओके, और BC square, अब BC square तो राइट ट्रायंगल नहीं है क्योंकि पूरी साइड में है. So see here 2AC square means AD square plus BC square plus BC square. So BC is BD plus CD. So BC is equal to BD plus CD. Okay, now here 2AD square plus 2BC square plus BD plus C. 2AD square plus, अब मैं BC की जगह BD. ओके, क्योंकि हमें AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर तो है, अब BD चाहिए, तो CD की जगह मैं BD पुट कर रहा हूं. तो यहां से देखो आप BD is equal to 3CD है, BD is equal to 3CD, so it is CD is equal to 1/3 of BD. Okay, CD is equal to 1/3 of BD. So just put the values here. So 2 CD means 1/3 BD square plus BD keep as it is 1/3 BD. So is equal to 2AD square plus 2 into 1/9 BD square. Okay, now
So you forget something, write here square. So it is also square. So this is also square. Okay. So plus BD plus 1/3 BD. So it is 3 BD plus 1 means 4/3 BD square. So this is the important step now. Now see 2 AD square plus 2/9 BD square plus 4 16/9 BD square. So 2 AD square plus denominator same, so just write 9. So it is 18 BD square. So 2. So 2 common here. So AD square plus BD square. Okay. Now see, in right triangle ADB, see AB square is equal to क्या है? AB square is equal to AD square plus BD square. AD square plus BD square. So just substitute the value here. So 2 AD square plus BD square होगा AD square. So it is AD square. So this is our LHS. Okay? तो यही हमें दिखाना है 2AC square plus BC square is equal to 2AB square. Third problem, that is 15th problem from exercise 6.5, and it is very important. In an equilateral triangle ABC, see here, this is the equilateral triangle ABC. D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 BC. So this is D. So BD is 1/3 BC. Prove that 9 AB square is equal to 7 AB square. So we have to show this. 9 AB square is equal to 7 AB square. And it is given only BD is equal to 1/3 BC. Now we consider here LHS. So 9 AD square. Okay, so see here 9. Now AD square. Okay, so AD square means अब यहाँ पे कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं है. आप ध्यान से देखो, there is no perpendicular line. Okay, so it means we have to construct perpendicular line. So draw here one perpendicular line. Suppose this point is M. Okay, so construction. Draw EM perpendicular to BC. And ABC is an equilateral triangle. It means AM to perpendicular line है, it is act as median. So median means BM is equal to MC. Okay, so BM is equal to MC. अब now देखो AD square, तो राइट ट्रायंगल AD square का देखो AD ये राइट ट्रायंगल आ रहा है. Okay, so in a right triangle with ADM क्या होगा? So AD square is equal to, see AD square is equal to AM square plus DM square. So here AM square plus DM square. Okay, now see nine AM square. So just don't multiply first. You see AM square. अब मैं A साइड को इस राइट ट्रायंगल में कंसीडर कर रहा हूं. ओके, सो AM स्क्वायर,
So here in right triangle AMB, तो यहां पे क्या होगा, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर. Okay, so just substitute here. So 9 AM square means AB square minus BM square plus BM square. अब यहाँ पे देखो था, तो हमें इधर AB चाहिए, तो एक को कुछ मत करना, so keep AB as it is, so AB square. Now BM, see here, BM or MC both are equal, and BM is half of BC. Okay, so BM is half of BC. So just substitute half BC in place of BM. So half BC square plus DM. Now see DM, अभी हमको DM की वैल्यू निकालना है. हमें BM मतलब BC का आधा हो गया. अब DM क्या होगा, तो यहाँ पे देखो BM इज इक्वल टू ये साइन BM माइनस BD. ओके, BM माइनस BD. सो हियर राइट BM माइनस BD. अब BM क्या है, हाफ ऑफ BC, और BD it is given 1/3 of BC. Okay, so calculate this 3 minus 2, so 1/6 BC. So DM is 1/6 BC. Okay, now just substitute here. So DM means 1/6 BC square. So this is the bracket. Now see 9 AB square minus 1/4 BC square plus 1/36 BC square. Okay, so again 9. Now see, this is equilateral triangle. It means AB is equal to AC is equal to BC. So AB की जगह आप BC सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So here BC square, so no, we just substitute AB. We needs AB. So keep as it is AB square minus 1/4 AB square plus 1/36 AB square. मैंने BC की जगह AB को सब्स्टिट्यूट किया है. So we get here 9C. Here denominator is 1, 4, 36 denominator. Make the denominator equal, that is 36. So here 1 AB square minus 9 AB square. So here 1 denominator means multiply by 36 AB square. Here denominator 4 multiplied by 9 AB square, and here denominator 36 multiplied by 1, so it is 1 AB square. Okay, so it is 36 minus 9, that is 27 plus 1, 28 AB square divided by 36. So 9 4 36, 7, so we get 7 AB square. So this is our RHS. Okay, तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो इसमें हमने क्या किया, ABC ट्रायंगल लिया, एक AM परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पर. तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया ये ट्रायंगल AMB. यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM सब्स्टिट्यूट किया. फिर AM साइड के लिए हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया ABM. तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर. फिर हमने
bm की जगह हाफ bc सब्स्टिट्यूट किया, और dm मतलब bm माइनस bd, तो dm की वैल्यू आ गई 1/6 bc, उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर bc की जगह हमने ab सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, we get 7ab square. Okay, this is the solution. Now we take last problem. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So we have to prove 3ab square is equal to 4ab square. So in equilateral triangle. So see here. Suppose ABC is an equilateral triangle, okay, and there is no altitude is given, so we just draw perpendicular, draw AD perpendicular to BC. So यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हमें 3AD square is equal to 4AD square दिखाना है, तो जस्ट दिस इज 90 डिग्री, तो मैं कोई भी एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर राइट ट्रायंगल ADB. ओके, तो इसको मैंने कंसीडर किया है ADB, तो ADB की जगह सी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus BD square. So it is very easy problem. So we need AD, तो AD को एज इट रखो, प्लस अब देखो BD. We know AD is altitude, so BD is equal to BC, and so BD is equal to half of BC, and BC is equal to AC, AC is equal to AD, क्योंकि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो BD की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं हाफ BC स्क्वायर. So here AD square plus 1/4 BC square. So AD square plus अब BC इक्विलैटरल ट्रायंगल तो BC AD के बराबर हो गया, so right here in place of BC AB square, right, AB square in place of BC, so this is AB square. So multiply each term, multiply each term by 4, so we get here 4AB square is equal to 4AB square plus 1AB square. So ये इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, so 4AB square minus 1AB square is equal to 4AD square. So therefore 3AB square is equal to 4AD square. This is our proof. यही हमें दिखाना है, 3AB square is equal to 4AD square. तो इसमें हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, AD परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ADB राइट ट्रायंगल में AB square is equal to AD square plus BD square को यूज किया हमने, BD की जगह हाफ BC सब्स्टिट्यूट किया, we get AD square plus 1/4 BC square, BC की जगह हमने AB square पुट किया, और इस स्टेप में हर टर्म में को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो we get this and we get answer, that is 3AB square is equal to 4AD square. So this is the solution. Thank you.